हेलो चेक 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 सर। क्या चालू है? ऑफ रखो भाई, ऑफ ऑफ। Just Shibani, have someone switch off the music for 5 minutes. ठीक है, इतना काफी है, चलिए. Ma'am, what do you think of Side Hero being part of the web series, and it's a very unique, innovative concept and very big concept nowadays. So, what does Web series, of course, web काफी बड़ा हो रहा है इंडिया में, and I'm so excited that my first release on the web as a part of a series is Side Hero. बहुत ही entertaining project है. I'm working with amazing actors. Kunal Roy Kapoor is beyond talented. He's amazing. बहुत ही अच्छा, entertaining, comedy, fun, and very clever writing in this project. मेरा ड्रीम था कि मैं रोहन सर के साथ काम करूं, रोहन सपी सर के साथ, and this is actually my second project with him, but releasing first, so I'm very excited about it, and the fact that I'm working with Eros now, and it's the first original series, बहुत ही ज़्यादा exciting है. But the duration is low when it compared to picture films. So, what is the when it comes to potential showing the talent of an actor or an actress? How do you ड्यूरेशन इज़ नॉट लो एक्चुअली, क्योंकि हर एपिसोड 20 मिनट के ऊपर है. 8 एपिसोड का एक पहला सीज़न का सीरीज़ है. इनफैक्ट आई फील इट्स इवन ग्रेटर एंड अ बिगर अपॉर्चुनिटी ऑन द वेब, बिकॉज ऑडियंस बहुत रिपीट वैल्यू होता है उसमें. आप बहुत बार देख सकते हैं, आप उसे अपने टाइम पे, अपने समय पे देख सकते हैं. सो काफ़ी प्लस पॉइंट्स होते हैं टू बी ऑन द वेब, एंड इट्स राइट देयर. इट्स फॉर एवरीवन टू वॉच इट at your own time, कहीं भी, कहीं, whenever you want. It's convenient and really good content out there. अभी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा creative लोग involved हैं. Actors के लिए बहुत बड़ी opportunity है कि आपको हर किस्म के roles offer हो रहे हैं. So yeah. मैम टीवी कर लिए, बॉलीवुड कर लिया, वेब सीरीज भी, डिजिटल मीडियम में भी आ रहे हैं, तो कहाँ से ज़्यादा एंजॉय कर स्टेज भी कर लिया. कहाँ एंजॉय कर पाते हैं? मैं हर काम में एंजॉय करती हूँ. मैं जितना भी काम करती हूँ मैं बड़े दिल से करती हूँ, और यही उम्मीद के साथ करती हूँ कि लोगों को मेरा काम पसंद आए. एंड माध्यम जो भी हो, मीडियम जो भी हो, मुझे हमेशा एक ही चीज़ की उम्मीद रहती है, वो है प्यार. एंड आई एम गेटिंग दैट, एंड आई वुड ट्राई एंड परफॉर्म वेर एवर आई कैन. Recently, you saw the success of Scared Games, and Rakashya directed. So, what do you have to say? The limitations, so when it comes to dialogue delivery or in scenes, so that should be a limitation, or when it comes to medium, because it's not censored as such. So, what do you have to say? नहीं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी होनी चाहिए. वेब में ऑफ कोर्स एवरीवन नोज दैट देयर इज़ नो सेंसरशिप एज ऑफ नाउ, बट आई थिंक वही कंटेंट लास्ट करेगा जो फ्रीडम के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी दिखाया जाएगा. एंड साइड हीरो इज़ आउट एंड आउट एंटरटेनमेंट, and of course Sacred Games has done really well for the industry, because it's shown a way of acceptance कि हाँ, good content will work on web, on all platforms. So I'm very excited about these times, and I am hope and pray कि आपको Side Hero पसंद आए. बिग बॉस भी आ चुका है, कितना एंजॉय? सर बिग बॉस मैंने एक एपिसोड भी अभी नहीं देखा है, बिकॉज इस हफ्ते अगर आप पता नहीं मुझे फॉलो करते होंगे तो मैं आई बिन एवरीवेयर. आई बिन इन ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, अहमदाबाद, लखनऊ, इन दिस वीक मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा है. एज सून एज आई गेट टाइम फ्रॉम प्रमोशन एंड डूइंग अनदर शो, आई विल कैच अप. मैं सारे एपिसोड जितने मिस किया है मैं फिर से देखूंगी. ये तो मालूम हो गया है। बिल्कुल नहीं पता. आई हैव नॉट बिन हियर ओनली, मैं यहाँ थी ही नहीं. थैंक यू. सर थोड़ा आगे ले सर. बस 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 बस. रुके, मैंने अगर 3 का लॉस. Sir, what do you think of the new concept web series? Very innovative, very big, and every big producer, directors, being part of the web series scenario. So what do you have to No, this is an interesting space which has been created now for makers, and I think that's a great platform to tell stories.
It's high time that we understand this digital platform and go and understand the format and deliver. So today I'm here for Eros now, looking out for this digital film. But when it comes to picture film, can it be in the future ever be compared to that medium, which have the larger light effect when it comes to visualization as such? It's a different medium from films, but still I feel that it has got its own space. You have the stories which will suit this format, and great for makers, great for viewers, great space to tell stories. Your larger than life project Zero is being released after some months. So how is the anxious regarding the project, and what do you have to say? It will bring a different kind of story and scripting kind of change in the industry as such. I don't know what will change with Zero, but yeah, I'm really excited, and I'm excited that I'll be here with something new, something which I haven't done before, and I'm really looking forward to get that to the audience soon. Side please. Thank you. Thank you. How much is the Thank you, sir. Sir. Sorry. हमारे बाजू फाइट कर दे प्रभात चल बड़ा करिए सर थोड़ा आगे जाइए थोड़ा आगे बस 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 चलो रोल Rolling. Kunal, this is the first time you are exploring a new medium web series. So how has it been the experience, and what would you say Side Hero? What is the project all about? I mean, it's a format. हाँ तो this is actually हाँ तो ये this is not my first web series. मैं इसके पहले I've been a part of Tripling, I've been a part of another show called Going Viral. तो but I'm very excited by the web format and the web medium because it's really giving artists a fresh new platform to express themselves, or where we're getting to do some very interesting content, and I think that this is also a comedy that is really pushing the genre a little bit, especially to what we've been exposed to so far. So, and it's also self-deprecating. I'm making fun of myself a little bit. So बहुत मज़ा आया. Not only working with Rohan Sippy, but also with Gauhar, with Arjun, with Gopal, a really talented bunch of actors who are all fantastic and have done a great body of work themselves. So मुझे बहुत मज़ा आया ये series बनाने में, and just be a part of it. Yeah. And sir, Ramesh Shippy production, so they have made films. So I know. what do you have to say about being associated with Ramesh Shippy production? I actually have been associated with Ramesh Ji's production house for the last 10 years now. मैंने एक film direct भी की थी उनके लिए called The President is Coming, and Rohan was very brave and showed a lot of faith in me to make me direct my first film, The President is Coming. और उसके बाद नौटंकी साला भी हमने साथ में की थी, और we've done a few other short films together, and I'm really honored that the association with Ramesh Sippy Productions has been a really long and fruitful one, and just happy that Eros now came on board to, and this is their first show, and it's very rare कि एक web platform एक comedy के साथ अपना platform launch करें, and I think कि this is a big step for Eros now to launch their not launch the platform, but to put out their first original content is a comedy, and I think that's great. How do you see the digital platform in the future?
many big stars have been debuting at feature. I think a digital platform is the way in which people want to consume entertainment. The people want to watch now at their own time, at their own convenience. They want content which is also a little bit more evocative, little bit more provocative. So वो सब it's rare that you get to see it on screen, पर अपने स्क्रीन पे जो अपने पॉकेट में है, वो जो छोटा सा स्क्रीन है, और घर पे जो अभी स्ट्रीमिंग के दौरान द स्टफ दैट यू कैन गेट टू एक्सेस ऑनलाइन is very exciting to audiences, and they can watch it at their own convenience. They can watch it without having to pay a lot of money to buy a ticket. So I think it's really the way, it's the way forward. Okay, you also debuted in our social media, also the Instagram. I know, so yeah. how is the response? Well, the response has been good. The following is small but growing. I'm still getting a hang of it. I don't know exactly what I'm doing, but it's going to take me a little while to get the hang of it. अभी भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता मुझे क्या दबाना है, कहाँ से क्या, मुझे कुछ ठीक ढंग से. Even Twitter, I've been on it for a while, पर Twitter भी मुझे, I haven't tweeted a lot. So social media is one thing that I need to get my head around. Yeah. Thank you. Thank you. Sir, want to ask about the web series medium right now. You talk about on everywhere. It's very noted. But what about the commercial side? When you talk about the commercial side, when it comes to picture films, larger than life and huge money involved in it. So how beneficial is making a web series as a filmmaker as a producer? That is a very big question. But I think the point is, when Dada Saheb Phalke started making cinema, I don't think he was thinking about the commercials of it very big hoga. I think you get excited because एक नया opportunity है कि आप करोड़ों लोग तक पहुंच सकते हो immediately. हमने जुलाई अगस्त में शूटिंग की और सितंबर में ऑडियंस तक पहुंचाएंगे, ये तो फिल्म में पॉसिबल ही नहीं है. तो हर नए टेक्नोलॉजी और हर नए माध्यम से you get exciting new thing, and there are definitely more phones in India than cinema screens. So hopefully ये medium की popularity सबसे ज़्यादा होगी, and let's hope हम लोग अच्छे stories इसमें बना सकते हैं, and audiences will be entertained. But newcomers के लिए suggest platform है ये? Sorry. I think definitely जैसे YouTube जैसे platforms and newcomers को opportunities मिलते हैं, and at the same time हम देख रहे हैं कि बड़े stars भी interested है. I think दोनों के फ़ायदे हैं. Newcomers के लिए entry मिलती है, and star के support के साथ ये platforms अपने viewership काफ़ी बढ़ा सकते हैं, और medium को भी और notice और attention मिल जाएगी. तो I think इंटरनेट ने हर ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को बदल दिया है, तो मीडिया भी बदलेगी उसके साथ. So what about Kunal Rai Kapoor, his comic timing accident, and what about other aspects which you वो कुणाल रॉय कपूर में मतलब 10-12 साल से मेरे दोस्त और कॉलीग रहे हैं, तो ये जब आइडिया हमें सूझा था तो इमीडिएटली उन्हीं के साथ डिस्कस कर रहे थे, और क्रिएटिव एक्साइटमेंट बढ़ गई. एंड जैसे आपने कहा उनकी कॉमिक टाइमिंग लाजवाब है, साथ साथ में वो बिल्कुल एक क्रू मेंबर की तरह काम करते हैं, एक टीम की तरह. कभी वो तो बहुत वो एनर्जी का बहुत फ़ायदा होता है जब आप एक शो करते हो जिसमें आप 8-10 मिनट फुटेज निकाल रहे हो हर रोज़, काफ़ी स्पीड से काम करना पड़ता है. तो उस वक्त इट्स डेफिनेटली ग्रेट टू हैव गाइस लाइक कुणाल, गोपाल, गौहर, सब ने बहुत अच्छा काम भी किया और मिलजुल के बहुत अच्छे स्पिरिट से काम किया. थैंक्स. Still. ले लो छोड़ो ले लो.
तो शुरू हो रही है जर्नी अभी गाने तो गा रहा हूँ लेकिन आई थिंक अभी एक्टिंग की भी जर्नी शुरू हो रही है. ये मेरी पहली शो है. देयर इज another movie that's coming out on the 12th of October, but this is my first ever acting debut actually. This is for me. तो बहुत मज़ा आया शूट करते रोहन सिप्पी के साथ और कुणाल इज़ एन अमेजिंग एक्टर. बहुत मज़ा आया, बहुत हंसी आई. It's such a funny script. You guys have to watch it just for Kunal because he has done an amazing job. And it was lovely acting opposite Gohar. She's also beautiful. So I had a blast. Do you want more emphasis on the singing career or the acting career? What is your priority? वो तो अभी पता नहीं है, बहुत जल्दी है यार. I don't know right now. शायद एक्टिंग कर लूँगा, शायद सिंगिंग कर लूँगा. दोनों की इच्छा तो है. But it's a plus point that you are multi-talented, you know, being a singer and an actor. So how do you think Thank you. carry forward your career? मुझे अच्छा काम करना है. जो भी अच्छा काम आए तो मैं करूँगा. सिंगिंग हो या एक्टिंग हो. I just want to do good work. And besides this project, are you working on any singing project or film project? अभी मेरा एक अगला गाना आएगा नवंबर में और आई मीन अ फिल्म कॉल्ड जलेबी which is releasing on October 12th. So you can see me in that. Thank you. Thank you, sir. Thank you.